Good morning, friend. This is Amit Vashishtha, your fresh for guide, programming guru. Today I will discuss about new topic, software engineering. Today in software engineering, I will discuss about software development life cycle. Why need software development life cycle, and why use systematic approach of software development by the help of SDLC. So first of all, I will discuss about what do you mean by SDLC. SDLC, that means software development life cycle. It's behave just like a It- framework, or it provide a framework for managing the development of the software, from the initial planning to final delivery. In another word, we can say that SDLC is a process used to plan, design, develop, test, and deliver the software application as per user requirement or a stakeholder requirement. That means, in simple word, we can say that according to IEEE, SDLC is a structured process that guide the creation and maintenance of eventual requirement of the software. यानी कि आप कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है, एक बिहेव किसके जैसा करता है, आपका फ्रेमवर्क के जैसा करता है, स्ट्रक्चर के जैसा करता है, प्रोसेस के जैसा करता है। किस पर्पज़ के लिए? किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। और सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसका प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग किस पर बेस्ड होता है? यूजर के रिक्वायरमेंट पर। और यूजर की रिक्वायरमेंट यानी कि सिस्टम यूजर के द्वारा हम लोग सिस्टम को एनालाइज करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और उसके बाद हम लोग उसको डिजाइन करते हैं। डिजाइन करने के बाद उसको डेवलप करते हैं, डेवलप करने के बाद उसको टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद हम लोग फाइनली डिलीवर एंड मेंटेन करने का काम करते हैं। यानी कि देयर आर सेवरल फेजेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। फर्स्ट फेज इज नोन एज प्लानिंग, second phase is known as defining, third phase is known as designing, fourth phase is known as building or development, fifth phase is known as testing, sixth phase is known as deployment, and last phase is known as maintenance. यानी कि there are seven phases of software development life cycle. That means initial phase to final phase. Final phase, that means deployment and maintenance. Initial phase, that means planning. Second phase is defining. That defining, in another word, we can say that system requirement analysis. Third one is designing. That means what? Designing, that means constructing and architecting. Fourth one is building, that means coding, implementation, development. Next one is software testing, and last one is deployment and maintenance. Now first of all I will discuss about प्लानिंग। सबसे इम्पोर्टेंट फेज क्या होता है? प्लानिंग फेज होता है। और प्लानिंग फेज क्या डिफाइन करता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? इस प्लानिंग फेज डिफाइन करता है प्रोजेक्ट के स्कोप को, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को, एंड प्रोजेक्ट को के फिजिबिलिटी को। डेट मीन्स वी कैन से डेट इट इंक्लूड टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क एंड एस्टेब्लिश द टाइमलाइन, बजट एंड टेक्नोलॉजी। प्लानिंग फेज include two key activity or three key activity. First one is cost benefit analysis, second one is risk management, and third one is resource allocation. तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस।
कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यानी कि बजट, यानी कि इवेल्युएट द प्रोजेक्ट फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और फाइनेंशियल विजिबिलिटी. सेकेंड वन इज risk management. Risk management, that means identify the potential risk, challenge and the development strategy. Third one is resource allocation. Resource is based on budget and tools, and that means resource allocation associated with tools and budget. Now second phase is defining, that means requirement analysis. इस फेज में हम लोग क्या करते हैं, गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन को और एनालाइज करते हैं स्पेसिफिक नीड को एज पर वेंडर रिक्वायरमेंट, एज पर स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट. यानी कि इस फेज में हम लोग सॉफ्टवेयर कैसे, हाउ टू यूज दिस सॉफ्टवेयर एंड हाउ टू डेवलप दिस सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज द नीडेड ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इन दिस फेज. Third one is designing. This is the most important phase of software development life cycle, because designing translates the requirement into detailed blueprint of the software. This includes designing the architecture, the user interface and other components. In this phase, we can uses 4 key activity. First one is interface design, second one is database design, थर्ड वन इज सिस्टम डिजाइन. वन हम लोग और इंक्लूड करते हैं, उसका नाम होता है सिस्टम डिजाइन और सिक्योरिटी डिजाइन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट इंटरफेस डिजाइन, दैट मीन्स हाउ यूजर इंटरेक्ट विथ सॉफ्टवेयर. डेटाबेस डिजाइन यानी कि प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज द डेटा. थर्ड वन इज सिस्टम डिजाइन यानी कि ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ द structure of the software, and last one is security design. Security design, that means what? Ensuring this software is secure or protected or not. This phenomena is known as security design. Now I will discuss about next phase is deployment or development. That means development can be classified into 2 categories. First one is front-end development and second one is back-end development. Front-end development, that means what? Front-end development, that means technology. And back-end development, that means database. यानी कि that means actually development में क्या होता है? This is where actual coding and construction of the software takes place. It is based on design specification. That means we can say that software engineer write the code for software application development.